कि जब हम टाइमिंग करेंगे, टाइमिंग ऑफ द इवेंट करेंगे कि भाई ये घटना इस दिन होनी चाहिए, तो वो उस दिन हो रही कि नहीं। अगर उस दिन से 2-3 दिन इधर उधर हो रही तब भी चलता है। वी आर द वन हु इज चूजिंग 30 डिग्री स्पैन, बट द rashis are not equal. Not every rashi is equally distant, equally spaced. Having the 10th house position is also important, and the same sidereal time value that we got, they are telling you ki where is this ayanamsha moving to from different years. So in one year 1000, it was 9 degree 55 minutes. Then if you see in 1972, 23 degrees 28 minutes. 2005 में 23 degrees 55 minutes. So in this way, it has been moving, keep on moving in a year, in a span of a year. And this year, when we are here, it is 2025, 24 degrees, 12 minutes, 23 seconds. So it has given the table calculation already, all these things. But we don't need to use this. मतलब हमारा कोई इसमें use नहीं है इसका. It's just to see that where is this Ainamsha going into? Where is this? We just need to have the correction part. We need to have how much we need to correct our value. Okay, so Ainamsha correction, you see on page number 9, it is given. Page number 9, over there, we see years, various years, and right next to it, we are getting degree and minutes. So over here, we are getting something for 25. So it stays 13 minutes. Says 13 minutes, we have to do a minus for correction of 2025. Is it? So 13 minutes we have to subtract from the Ainamsha. Whatever value we are getting after our calculation, we need to do an Ainamsha correction for it. Is it clear now for everybody? Till this point, it is clear. Okay. So that's it. Like that's the basic understanding of what we need to do as a correction. So but these corrections are variable, like not everybody is using. So some will use Chitrapaksha. So if I show you in the software, within the software we have something called as related to calculation. So okay, everybody let's focus again. We go to up, Jagannath Hora, file, edit, modes, view, preferences. So we click on preferences. We get related to calculation, related to display, something like these, and then the first option is related to calculation. Okay, we click on that. Then again we get the second option is Ainamsha. So if I click on Ainamsha, you will see this box will open up, and in this box you will see how many Ainamshas are there. Traditional Lahiri, Uchya Paksha, Raman, Krishnamurti, fixed star based custom Ainamsha, Jagannath Spica, or middle of the Chitra always, fixed solar rotation place, all like this. Surya Siddhanta Ainamsha. There are various types of Ainamshas. Every different, there are, I'm telling you that there are various schools of Ainamsha. Everybody has a different way of doing things, of correcting the degrees and everything. So we will always go with True Lahari, Chitra Paksha, Ainamsha, the Spica one. Okay. We don't we whatever calculation and everything we do, we'll do it along to it. आता है, बिल्कुल सही आता है, एक्यूरेट आता है, टू द डेट. मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि जब हम टाइमिंग करेंगे, टाइमिंग ऑफ द इवेंट करेंगे कि भाई ये घटना इस दिन होनी चाहिए, तो वो उस दिन हो रही कि नहीं। अगर उस दिन से 2-3 दिन इधर उधर हो रही तब भी चलता है, बट उस दिन से महीने भर का डिफरेंस आ रहा है, तो वो गड़बड़ है। तो हमें फिर कुछ करेक्शंस अपने लिए करने पड़ेंगे। हमारा ट्रू लहरी अभी तक हमको 2-3 दिन के मार्जिन पे रिजल्ट देता है, एंड वी आर ओके विद इट, एंड यू शुड बी ऑल्सो ओके विद इट बिकॉज यू डोंट नो एनीथिंग एल्स, राइट? So this is the thing with Ainamsha. Then there is also, if you go into the book after Chitra Paksha, there is a, so everything rate, ion, chalan, and everything has been described over here, and that there's a whole formula to it. I don't want you to, I just want you to go and appreciate it. Okay, good job. Very good. I cannot do it. I cannot understand it, but you guys are doing something. That is what you should be in this state. Even I don't understand it fully.
लाइक ना मेरे को भी नहीं आता है, क्योंकि सबको, सी कार चलाना और कार बनाना दो अलग बात है। अभी जो तुम देख रहे हो इज लाइक हाउ इज अ कार मेड। You see the engine, it's like boom, 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 boom. You just clap. So very good. If it runs, I'm okay. ठीक है, मतलब तुम्हारा काम ये है कि प्रिडिक्शन आता है, बस होता है ना, बस बात खत्म। बाकी मेरे से अंदर देख के अप्रिशिएट कर लिया कि सब कुछ है, बढ़िया लगा हुआ है ना, वैसा है। Then we go move into like na this called table of 10th house. So definitely once we move into, after calculating the lagan, we also calculate the 10th house. And you will say, why is that, sir? Why we do? Why? Because 10th, so 10th house is like top of the head, top of the head. So we actually want to precisely, because we can precisely tell what is on the top of the head. We can actually see why is this coming into picture. First of all, I will answer that. Why is this coming into picture? Because we are the one who have chosen 30 degrees as a equal span, isn't it? क्या स्टार्स ने आके बोला कि हमको 30-30 में डिवाइड कर दो? नहीं ना। हमने तो बस ये देखा कि पूर्णिमा 12 पूर्णिमा होती है, 12 से डिवाइड कर दो। ब्रह्मांड हमारे मैथ्स में नहीं चलता है। हमें अपना मैथ्स ब्रह्मांड के हिसाब से बनाया है। इज इट ट्रू? We are not, we are the one who is choosing 30 degree span. But the Rashis are not equal. Not every Rashi is equally distant, equally spaced. They, some Rashis are 27 degrees only. They just are in a very small portion of area, like Aries. Aries is not a very large sign. It is a small sign. Even Brahprashra Hora Shastra mentions, okay, these signs are small. Virgo is a very large sign comparatively to Aries. It spans at least to 35 degrees. Okay, so all these divisions that we have done as an equal thing, just to make our calculation simpler and easier, as an equal division. But space is not bound to us. Space has chosen its own ways of doing things and like not keeping things, and that is why Aries sign is a little less. Other signs are a little wider, and some are longer, some are shorter. That's how. So that's why having the 10th house position is also important, and the same sidereal time value that we got, we can use and apply. We can look in this place, it says all places on the earth, and we can use the same sidereal time and get the 10th house position. We can exactly, मतलब जस्ट कुछ करने का नहीं है, बस टेबल देखो, 10th हाउस का पोजीशन मिल जाता है, 10th हाउस में क्या राशि राइज हो रही होगी वो मिल जाता है। दैट्स सो सिंपल। ठीक है, सो आई विल नॉट गो and like ना do practice of this, we don't need to, but just to know, just to appreciate it, just to know. Okay, so ये हो गया, टेबल हो गया। Sir, in any case, it cannot be different, right? Like what Lagan is coming, corresponding would be the 10th house Yes, 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 that sign will not, that would be coming up. Okay. yeah, yeah, that will not be. Okay, from this concept of not having equal divisions, we will move into Bhavchalit. Have how many of you have heard this word? Bhavchalit. Okay. Very confusing topic. A lot of like, again, 99% people know who have not studied like the making of the kundli, nirman of the kundli, they will not understand what Bhavchalit is. Because the whole idea of the Bhavchalit arises from the position. Now, what is Bhavchalit? Remove the word Bhav, remove the word Chalit, just forget that. Now, what it is? See, it is we who are making those diamond boxes. We are the one who is making a sign put in a very like a particular positions. Stars are not compliant to our calculations. That is what we need to be very clear. So अब क्या होता है कि हम जब कोई लगन का डिग्री पाए, जैसे कि अभी हमारा लगन का डिग्री आ रहा था, किसी अभी कल हम लोग 0 डिग्री का कैंसर का लगन आया था, हम लोग का कैंसर का लगन 0 डिग्री। Now, from uh, from where do we look at the first house? I know I'm like going in first house Rashi and talking about all these things. We have not discussed deeply in it, but still, because हमें first जो box है अपना वो 30 डिग्री का बनाना है, isn't it?
हमारा लगन आया है 0 डिग्री पे, सो क्या हम 0 डिग्री से आगे तक 30 डिग्री कर ले, कि 0 डिग्री को सेंटर पॉइंट बना के पीछे का हिस्सा 30 डिग्री और आगे का 30, पीछे का हिस्सा 15 डिग्री और आगे का 15 डिग्री ले? व्हाट वी शुड चूज? सी, 0 डिग्री का लगन है, हमें समझ लगन का मतलब क्या हुआ, लगन का मतलब हुआ कि 0 डिग्री पे ईस्ट होराइजन पे इस टाइम पे 0 डिग्री कैंसर राइज हो रहा है ना, कैंसर का जस्ट ऐसा टिप राइज होना शुरू हो रहा है। दैट व्हाट इट मीन्स। नाउ व्हाट शुड बी द लगन? शुड वी सी एवरीथिंग दैट इज अबव द स्काई, मतलब जो कि थोड़ा सा अबव हो और थोड़ा बिलो हो, यानी कि 15 डिग्री प्लस एंड 15 डिग्री माइनस टू दैट लगन should be taken as the lagan for 30 degree span, or should everything that is below the horizon, यानी कि 0 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री ऑफ कैंसर तक should be taken as lagan? What should we do? Think about this problem. Understand ki why is this concept of bhavchalit is coming into picture. So the thing that we take is plus minus 15 degrees. Okay, we take 15 degrees before it, 15 degrees after it. So 0 डिग्री का लगन होने पे 15 डिग्री पीछे का हिस्सा, 15 डिग्री आगे का हिस्सा, दैट वी विल कॉल एज फर्स्ट हाउस, एंड दैट इज वेयर होल गेम ऑफ भावचलित कम्स इनटू पिक्चर. आई विल शो यू हाउ. This is the box that we use to put all our signs and rashis and everything. अब ये जो लगन है, ये जो लगन है, ये जो पॉइंट है, ये स्टार का हमारा मिडिल पॉइंट आना चाहिए. ठीक है, स्टार का लेट्स से अपना जो लगन आया, वो लगन आया है 15 डिग्रीज, 3 राशि पार 15 डिग्रीज 00 मिनट्स, लाइक दिस इट कम्स. ठीक है, सो व्हाट विल हैपन इज दिस मच पोर्शन 3 राशि पार यानी कि कैंसर का साइन हो गया, तो यहाँ पे 4 नंबर आ जाएगा. तो 15, ये जो पॉइंट है मिडिल पॉइंट है वो 15 डिग्री का हुआ. तो -15 डिग्री यू विल बी स्टिल इन कैंसर ओनली, +15 डिग्री यू विल स्टिल इन कैंसर ओनली. सो ऑल द राशिज विल बी 5 लाइक वेरी सेंटर्ड. ये 7 होगा, मतलब पूरा 7 होगा, पूरा स्पैन 7 है, ये पूरा स्पैन 8 है, पूरा स्पैन 9 है. दैट हाउ इट इज 15 डिग्री में. बट वॉट हैपन्स इफ आई हैव अ 0 डिग्री? तब क्या है, तब प्रॉब्लम है, तब प्रॉब्लम है कि जब हमारा 3 राशि पार 0 डिग्री 0 मिनट का अगर लगन आता है, तो हमें तो अभी भी यही बनाना है 0 डिग्री का लगन. बट समझो, कैंसर का साइन तो आगे शुरू होगा ना, तो यानी कि कैंसर का साइन यहाँ पे है, लेकिन ये तो 15 डिग्री ही है, तो यानी कि जो इसका सेकंड हाउस है वो भी कैंसर का साइन आएगा, क्योंकि ये 15 डिग्री अगेन बचा. फिर यहां से लियो शुरू होगा, फिर यहां से यहां तक लियो जाएगा, फिर 6 शुरू होगा, फिर यहां तक 6 जाएगा, फिर 7 शुरू होगा, फिर 7 यहां तक जाएगा. दैट्स हाउ इट इज. यानी कि आधा पोर्शन जेमिनाई का आ रहा है. एंड इफ यू विल ऑब्जर्व द स्काई ऑल्सो एट 0 डिग्री कैंसर, just imagine, just imagine the horizon, imagine the horizon, and you are seeing just the tip of the cancer sign is coming up. So what you will be seeing is prominently a Gemini sign on the horizon up, and only the after some time you will see the cancer sign. Okay, are you clear on this? इतना समझ में आया, ये मुद्दा समझ में आया कि क्यों Yes, भाव चले का sir. कॉन्सेप्ट आ रहा है. अब तुम्हें कोई प्लैनेट मिला, इसी में डिस्कस कर लेते हैं. विल लुक इनटू द होराइजन थिंग, और लेट्स लुक इनटू होराइजन थिंग एंड देन कम बैक टू प्लैनेट्स. So this is something located at Amroha somewhere, and we are. I will show you the ground. So this is, and where is the direction? Okay, this is south. So this is east. Look at in the east there is a Venus right there. Like this is how you will be seeing the horizon. If I put the signs on, so see that's how you will be seeing the sky.
Are you able to see the screen fully, right? That's how you will be seeing. See how Aquarius is, you are seeing in Venus over there in the east, and there is some tip that is rising up. So what we take is, we take 15 degrees, यानी कि 15 डिग्री का ऊपर एंड 15 डिग्री का नीचे, इतना we will call as लगन. With our angle of view, we'll take 15 up, 15 down. That's how we will take as a lagan. That's the way. That's where the concept of bhavchalit comes. Now, if something, if some, see, if I have started the motion in the reverse direction, so everything is now going down. East, it's always rises, but making it reverse. Okay, so now everything is going down. Now sun is right. Sun has just risen, and this is the time of like 7:20, something like that. 7:20 is the time when sun is just has come up on the horizon. Okay, now I will start moving it further up. So this is Shravana nakshatra, this is Dhanishta nakshatra. So basically we are in the Capricorn, near to Capricorn, and Capricorn is going up, and now we will start seeing the tip of the Aquarius. So in this way, with this coming up, we will start seeing the tip of the Aquarius. So okay, Capricorn went like this way. Capricorn went away, and now we are just seeing the tip of Aquarius. So this way, the Aquarius came into picture. This point. So now Aquarius is starting to rise. Understand? And now Aquarius is starting to rise, and we are just seeing Aquarius over here. So we will take Capricorn as a 15 degrees as a Lagan, also as a part of the Lagan, and 15 degrees as a part of Aquarius as a Lagan. नॉट, तो तुम जब भी किसी का लेगन 0 डिग्री 1 डिग्री ऐसा देखोगे, सो ऑलवेज यू विल हैव टू यूज अ भाव चलित चार्ट, नॉट यूज. मैं वो तुमको दूसरा तरीका बताऊंगा हाउ टू डू इट, बट यू अंडरस्टैंड कि व्हाई भाव चलित का पिक्चर कमिंग टू पिक्चर, बिकॉज इट इज अस हु आर मेकिंग ब्लॉक्स ऑफ 30 डिग्रीज. इट इज अस. क्लियर है? ठीक है. अब इसके बाद समस्या और खड़ी होगी कब? जब प्लैनेट्स बैठाने होंगे, प्लैनेट्स तुमको रखने होंगे. ठीक है, नाउ विल लुक. ठीक है, अब नाउ like this way we are having our lagan like 3 4 5 like this. Let's suppose if a planet like Venus and Mercury are there. Let's suppose Venus is sitting right in Gemini, and Venus is at 28 degrees Gemini, and Mercury is all is in Mercury is in Cancer. It's in 20 degrees Cancer. ठीक है, 20. अब जो लोग भाव चलित का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो चार्ट कैसे बनाएंगे तुमको बताता हूँ. हाँ, 4 नंबर का लगाना है. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 ऐसा बना दिया. जेमिनाई कितने डिग्री का है? ओके, जेमिनाई 28 डिग्री वीनस. वीनस इज हेयर. ठीक है, इस तरह से लिख दिया. मरकरी किधर है? 20 डिग्री कैंसर. मकरी है. ओ, जातक का लगन बुध लगन पे हुआ है, और शुक्र 12वें घर का है. शुक्र उच्च के भाव मतलब घर में बैठा हुआ है, ऐसा बोलेंगे. बट इज इट द ट्रू केस? नो, इट विल नॉट बी द ट्रू केस. Now you will have to look. Okay, this is 0 degree. This is the Lagan. Venus is 28 degrees. That is very close. So Venus is actually in the Lagan only. Oh, Mercury is 20 degrees Cancer. This will be the border. That will be like 15 degrees of Cancer. Oh, 20 degrees Cancer means it has gone. It has gone to second house. This is the true position of Venus and Mercury. And what if you are using Rashi chart? Rashi chart shows you this only. Rashi chart will show you this way of doing things. But the true positions of planet will be seen from this point. So that is why once you sometimes what happens, those planets who are in higher degrees or lesser degrees, you will see them in Bhavchalit, they will move into second house. सर मैं तो पागल हो जाऊंगी, सर मैं पागल हो जाऊंगी, ऐसा सब कुछ करने से.
कब तक मैं ऐसे बैठ के देखती रहूंगी? So this will हाँ, only happen if the degree is 00 or 29 or something like that, no? I'm taking an extreme case scenario where like this way you will just understand it very beautifully. But obviously this will happen in most prominently 0 degrees, 29 degrees of Lagan, like na 29 degrees Lagan khatam hai lagbhag एकदम बॉर्डर पे, बॉर्डर लाइन. तो ऑब्वियसली दिस ऑल दिस सिनेरियोज विल कम इनटू बॉर्डर लाइन सिनेरियोज. सो प्लैनेट्स का भी बॉर्डर लाइन, मतलब प्लैनेट इज लाइक 29 डिग्रीज, प्लैनेट इज इन 3 डिग्रीज, वो 0 डिग्रीज. इन दैट केस सिनेरियो you will, it will appear to be in the second house, but it will might be moving into third house. It will be in actually in the third house. Okay. So the chart that we have drawn on the top, that is how Bhavchalit looks like, and the one that we have below, that is what is No, so Rashikrit. Bhavchalit chart, they will not do like this border things. This is my own way of doing things, of Okay. understanding. What they will show is, they will show the same thing Mm-hmm. in the Bhavchalit chart. When once you they will first show this as a Rashi chart, and Bhavchalit chart you will see they will do this. They will just do this, nothing else. They will just do this, and then you will be confused. Oh, वीनस मकरी मकरी वीनस किधर है? अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है. इस तरह से समझोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है. इधर कौन बैठता है? इजंट इट वेरी लॉजिकली करेक्ट, राइट ना? पूरा लॉजिक है ना, ऐसा कोई कुछ भी नहीं लगा दिया. किधर रख रहे हैं? दिस इज व्हाट वी कॉल एज, दिस अ टर्म कॉल्ड एज भाव स्पुता, भाव स्पुता, और वी ऑल्सो समटाइम कॉल एज कस्प. This Lagan degree, this 0 degree line, we called as Bhav Sputa, like the middle point of the Bhav. This is second house Bhav Sputa. This is third house Bhav Sputa, the middle point of the this thing. And that is how whatever we will वो अभी हम लोग 10th house का बता रहे थे ना, that is called 10th house Bhav Sputa or 10th house Kasp. That we calculate. Why do we calculate? Because of this region only. Because of this Bhavchalit and everything. Because signs are chota bada somewhere here and there. So that is why it is necessary to calculate the 10th house thing. Just to precise in your calculation, just to keep it that right, everything. आप क्लियर है ना? अभी तो कोई टेंशन नहीं होगा ना? तो तुमको आप तुम लोग को क्या करना है? तुम लोग एज अ माय स्टूडेंट, whenever see a chart of 2 degree from 3 degrees, 3 डिग्री से अगर 0 डिग्री से 3 डिग्री के बीच में है, और 27 डिग्री से 30 डिग्रीज के बीच में है, यू ऑलवेज मेक दिस वे. यू ऑलवेज मेक, एंड इवन यू विल सी द इवेंट्स ऑल्सो will happen 6 months prior or later, or based on this chart. So let's suppose let's take another example, like Leo यहाँ पे खत्म हो रहा था एंड वर्गो यहाँ से चालू हो रहा है. So this is like somewhere 29 degrees Leo. ठीक है, ऐसा आया. सो लगभग लगभग वर्ग लियो तो खत्म हो गया ना. 6 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, 8 यहाँ, 8 यहाँ, 9 यहाँ, 9 यहाँ, 10 यहाँ, 10 यहाँ, 11 यहाँ, 11 यहाँ, 12 यहाँ, 12 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ. ऐसा है. 29 डिग्रीज का लियो है. सो लगभग लगभग खत्म है. सो व्हाट विल हैपन इज, यू विल सी somebody is in the activation of 12th हाउस. सो तुम उसको रिजल्ट्स बोलोगे क्या? कि अगर किसी का बर्थडे जैसे होता है, let's suppose somebody's birthday is on 15th March. So from 15th March, they will start running 12th house. There's 12th house getting activated. 15th March से वो शुरू होगा. Now, right after 6 months, they will actually enter into Leo. Right after 6 months, वो लियो में एंटर कर जाएंगे. सो एक्चुअली में जो लियो का भी प्रिडिक्शन होगा, वो तुम 6 महीने इसमें जोड़ करके 15 मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. सो 15 सितंबर से उसको तो लियो के रिजल्ट्स मिलना चालू हो गए हैं. ऐसा जान लेने का. क्लियर है ना?
तो अभी वही है, इसको कैंसर का रिजल्ट इसको यहाँ पे मिलना शुरू हो गया होगा 15 मार्च से ही, यहाँ पे 1 साल पहले से मिलना शुरू हो गया था कैंसर का रिजल्ट. दैट इज वाई द टाइमिंग इज सो टू बी टेकन केयर इन द 29 degrees 0 degree 11 cases. So basically, Bhavchalit chart is more accurate, if Yes, more yes, accurate compared to Rashi chart, accurate. especially if the Lagan degree is, at the Yeah, border. yeah, Okay. at the border. Hmm. But I want you to understand why we are doing this. What is the reason for looking into Bhavchalik chart? Will you now there is a software help that is provided. Okay, I will stop this now.